योऽसो भगवान् सम्मा सम्बुद्धो साक्षातो येन भगवता सुपटिपन्नो यस्य भगवतो सावकसङ्घो तमयं भगवन् सधम्मं च सङ्घम् इमे सत्कारे यथार्हम् आरोपिते अभिपूजयामः साधुनो भन्ते भगवा शुचिरपरिनिब्बुतोऽपि पश्चिमाजनतानुकम्पमानसा इमे सत्कारे त्युपनाका भूते पठियन्हातु अम्हाकं हिताय सुखाय अर्हं सम्मा सम्बुद्धो भगवान् बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि स्वागतो भगवता धम्मो नमस्सामि सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सङ्घं नमामि अन्वयं बुद्धस्य भगवतो पम्बभाग नमोकारं करुणसे नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य अन्वयं बुद्धां सतिनायं कुरुमसे तं कोपं भगवन्तं एवं कल्याणम् इति सद्यो अभूवतो इति पिशो भगवान् इच्छाचरणसम्पन्न सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्मसा सत्ता देवमनुस्सान बुद्धो भगवान् बुद्धाभिगीतिं करोमसे बुद्धवारहन्तवरतादिगुणाभियुतो शुद्धाभिज्ञानकरुणा
समागततो बोधेशियो सुजनतं कमलं वसुरो वन्दाम्यहं तमरणं शिरसा जिनेन्दं बुद्धो यो सर्वपाणिनं शरणं खेममुत्तमम् पठमानुसतिष्ठान् वन्दामि तं वन्दामि तं शिरेणहम् बुद्धस्सस्मि दासो बुद्धो मे सामि किस्सरो बुद्धस्सहं नियादेमि शरीरं जीवितं चिदं वन्दन्तोऽहं चरिष्यामि बुद्धस्येव सुबोधितं नत्थि मे शरणं मन्यः बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन वड्ढेयं सत्तु शासने बुद्धं मे वन्दमानेन यं पुण्यं प्रसुतं यदा सर्वेऽपि अन्तरायामि माहेशं तस्य तेजसा कायेन वाचा मनसेन बन्धो पठदनाथ चिन्तो कालान्तरे मानुसतिनायं करोमसे साक्षात् भगवता धम्मो सन्दिट्ठिको अकालिको एहि पस्सिको ओपनयिको पच्चत्तं वेदितव्यो विඤ्ඤो हि ते अन्मयं ब्रह्मानुगीतिं करोमसे साक्षातादिगुणयोगवशेन सेयो योऽप्यपाकपर्यक्तिविमुखभेदो शीलादि धम्मोऽकुलोकपटना तदधारि धारि वन्दामहं तमरं वरधम्ममेतं धम्मो यो सर्वपाणिनं शरणं खेममुत्तमम् द्वितीयानुसतिष्ठानं वन्दामि शिरेणहम् धम्मस्मि दासो धम्मो मे सामि किस्सरो धम्मस्सहं नियादेमि शरीरं जीवितं चिदं वन्दन्तोऽहं चरिष्यामि धम्मस्येव सुधम्मतं नास्ति मे शरणं अन्यं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन वड्ढेयं सत्तु शासने धम्मं मे वन्दमानेन यं पुण्यं प्रसुतं यदा सर्वेऽपि अन्तरायामि माहेशं तस्य तेजसा नमो प्रतिगणाथ वचन कालांतरे संवर्धित मयं संघान सतिनायं करोमसे सुपटिपन्नो भगवतो सावति संघो उजुपटिपन्नो भगवतो
सावक संगो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संगो सामीची पटिपन्नो भगवतो सावक संगो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगं नष्टपुरुषपुङ्गला येषु भगवतो सावक संगो आहुनेयो पाहुने दक्षिणे अंजलि करणीयो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकसारथिं संभावगीतिं करोमसे सधम्मजो सुपटिपति गुणातीतो जो चट्टविदो हरिय कुग्गल संग सेठो शीलादिधम्म प्रवराशयकार चित्तो वन्दानं गणं सुशुद्धं संघो यो सर्वपाणिनं शरणं खेममुत्तमं तदीयानुसतिष्ठां वन्दामि तं चिरेण अङ्गस्स्मि दासो संघो मे सामिकित्सरो संगस्सहं नियादेवी शरीरं जीवितं चिदं वन्दन्तो चरिष्यामि सङ्गस्सोपटिपन्नतं नत्थि मे शरणं अन्यत् सङ्गो मे शरणं वरम् एतेन सच्च पड्डेयं सत्तु शासने संगं मे वन्दमानेन यं पुण्यं प्रसुतं यदा सर्वेऽपि अन्तरायामि माहेषु तस्य तेजसा संघे कमं पुट्टमया संघोपटिगनाथ वचन्तं कालान्तरे संवरितं वसन्ति Is the audio okay? Kindly just say yes or no. जिसमें हमने महाकश्यप भुजंग सूत्र सुना था उसका हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं ताकि वो सब समझ में आए।
ऐसा मैंने सुना। एक समय भगवान राजगृह में विहार कर रहे थे, देलू वन में, जहाँ स्क्विरल्स का फीडिंग ग्राउंड है। उस समय आयुष्मान महाकश्यप पिपली गुहा में रह रहे थे। वो बहुत बीमार थे, बहुत कष्ट में थे। तो भगवान सायं समय में एकांत से उठकर जहाँ महाकश्यप रहते थे वहाँ पे गए और वहाँ जाके अपने आसन पे बैठ गए। और बैठने के बाद महाकश्यप से बोले, कहो कश्यप कैसे हो, अब तुम ठीक हो रहे हो, अपने दर्द सहन कर पा रहे हो, तुम्हारे दर्द बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं, कुछ परेशानी कम होने की साइन है कि बढ़ने के साइन है। सब कहते हैं नहीं भगवान, मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, वो काफी कष्ट हो रहा है, दर्द बहुत ही ज्यादा है, दर्द कष्ट के दुखद वेदना के कम होने के कोई आसार नहीं नजर आते, बढ़ ही रहे हैं। तो भगवान बोलते हैं, कौशल 7 बोधि के अंग मैंने समझाए हैं अच्छी तरह से, जिनको मैंने कल्टीवेट किया है और पूरी तरह भावित किया है और बहुलीकित किया है, बढ़ाया है, डेवलप किया है, जो कि पूर्ण अभिज्ञा बोधि निब्बान की ओर ले जाते हैं। कौन से 7? पहला सती संभोजन, सती बोधि का अंग मैंने बहुत अच्छी तरह से उसका आख्यात किया है, उसको डेवलप किया है, कल्टीवेट किया है, जिससे कि पूर्ण बोधि प्राप्त होती है। ब्रह्मा विषय दूसरा बोधि का, जो कि बहुत अच्छी तरह से मैंने आख्यात किया है, कल्टीवेट किया है, भावित किया है, डेवलप किया है, और जो पूर्ण संबोधि और निर्वाण की ओर ले जाता है। वीर्य बोधि का अंग इसी प्रकार कश्यप, जो मैंने बहुत अच्छी तरह से आख्यात किया है, भावित किया है और बहुलीकित किया है, जिससे कि अभिज्ञा, संपूर्ण ज्ञान, संबोधि और निर्वाण की ओर ले जाता है हमको। इसी तरह प्रीति बोधि का अंग, जो मैंने अच्छी तरह से आख्यात किया है, भावित किया है और बहुलिखित किया है, और ये अभिज्ञा संपूर्ण ज्ञान, बोधि और निर्वाण की ओर ले जाता है। और प्रशब्दी बोधि का अंग, जो कि मेरी तरह अच्छी तरह आख्यात किया गया है, भावित किया गया है और बहुलिखित किया गया है, उसको पूर्णता की ओर लिया गया है, जिससे कि अभिज्ञा, संबोधि और निर्वाण प्राप्त होता है। और इसी तरह से समाधि बोधि का अंग, जो कश्यप, जो मैंने बहुत अच्छी तरह से आख्यात किया है, भावित किया है और उसका पूर्णता की ओर ले गए हैं, ये पूरे ज्ञान के लिए, बोधि के लिए और निब्बान की ओर ले जाता है। और अंत में उपेक्षा बोधि का अंग, जो कि कश्यप मैंने अच्छी तरह से एक्सपाउंड किया है, बड़ी तरह से आख्यात किया है, भावित किया है और उसका बहुलीकरण किया है, जो कि पूर्ण ज्ञान, संबोधि और निब्बान की ओर ले जाता है। ये 7 बोधि के अंग कश्यप बहुत अच्छी तरह से मैंने आख्यात किए हैं, भावित किए हैं और बहुलीकरण किया है उनका, और ये संपूर्ण ज्ञान, बोधि और निब्बान की ओर ले जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है भगवान, महाकश्यप बोलते हैं, ऐसा ही है भगवान, सचमुच ऐसा ही है भगवान। ये सुगता सचमुच के बोधि के अंग है, इस प्रकार भगवान बुद्ध ने कहा। और भगवान कश्यप और महाकश्यप जी बहुत प्रसन्न होकर उन्हें भगवान की वाणी का अनुमोदन किया, अभिवादन किया। और फिर भगवान
महाकश्यप, बनते महाकश्यप जो है अपने रोग से मुक्त हुए, उठ गए, और भगवान और बनते महाकश्यप का जो बीमारी थी वो तुरंत समाप्त हो गई। तो इस प्रकार ये पहला बोधिसत्व या महाकश्यप गिलान। इसी प्रकार बाकी के भी जो भुजंग सूत्र है, पहला सूत्र महाकश्यप को, दूसरा सूत्र महामोगलान को भगवान जाके देते हैं, और दूसरे सूत्र में भगवान खुद बीमार होते हैं तो महाचंद्र उनको देखने आते हैं, तो महाचंद्र को कहते हैं कि आप 7 भुजंग के पाठ करो, और महाचंद्र भुजंग का पाठ करते हैं और भगवान ठीक हो गए खड़े हो जाते हैं। तो इस प्रकार से 3 ट्रेडिशनल सूत्र हैं जो परित्ता के रूप में दिए जाते हैं। जब बीमार होता है कोई तो ट्रेडिशन ये है कि हाँ इसकी चैंटिंग करनी चाहिए। बात का प्रवचन from childhood and youth until adulthood. It was first published in the book Everything is Teaching Us. So this was translated by Paul Breiter. Wholehearted training. In every home and in every community, whether we live in the city, the countryside, the forests, or the mountains, we are the same in experiencing happiness and suffering. So many of us lack a place of refuge, a field or a garden where we can cultivate positive qualities of the heart. We experience this spiritual poverty because we don't really have commitment. We don't have clear understanding of what this life is all about and what we ought to be doing. From childhood and youth until adulthood, we only learn to seek enjoyment and take delight in things of the senses. We never think that danger will threaten us as we go about our lives, making a family and so on.
If we don't have land to till and a home to live in, we are without an external refuge, and our lives are filled with difficulty and distress. Beyond that, there's the inner lack of not having Sila and Dhamma in our lives, of not going to hear the teachings and practice Dhamma. As a result, there is little wisdom in our lives, and everything regresses and degenerates. The Buddha, our supreme teacher, had metta for all beings. He led sons and daughters of good families to be ordained, to practice and realize the truth, to establish and spread the Dhamma, to show people how to live in happiness in their daily lives. He taught the proper ways to earn a livelihood, to be moderate and thrifty in managing finances, to act without carelessness in all affairs. But when we are lacking in both ways, externally in the material supports for life, and internally in spiritual supports as well, then as time goes by and the number of people grows, the delusion and poverty and difficulty become causes for us to grow further and further estranged from Dhamma. We aren't interested in seeking the Dhamma because of our difficult circumstances. Even if there's a monastery nearby, we don't feel much like going to listen to teachings because we're obsessed with our poverty and our troubles and the difficulty of merely supporting our lives. But the Lord Buddha taught that no matter how poor we may be, we should not let it impoverish our hearts and starve our wisdom. Even if there are floods inundating our fields, our villages and our homes, to the point where it's beyond our capability to do anything, the Buddha taught us not to let it flood and overcome the heart. Flooding the heart means that we lose sight of and have no knowledge of the Dhamma. There is the ogha that is a flood of sensuality, of views, becoming and ignorance. There is the ogha of sensuality, the flood of becoming, the flood of views, and the flood of ignorance. These four obscure and envelop the hearts of beings. They are worse than water that floods our fields, our villages, or our towns. Even if water floods our fields again and again over the years, or fire burns down our homes, we still have our minds. If our minds have Sila and Dhamma, we can use our wisdom and find ways to earn a living and support ourselves. We can acquire land again and make a new start. Now, when we have our means of livelihood, our homes and possessions, our minds can be comfortable and upright, and we can have energy of spirit to help and assist each other. If someone is able to share food and clothing and provide shelter to those in need, that's an act of loving kindness. The way I see it, giving things in a spirit of loving kindness is far better than selling them to make a profit. Those who have metta aren't wishing for anything for themselves. They only wish for others to live in happiness. If we really make up our minds and commit ourselves to the right way, I think there shouldn't be any serious difficulty. We won't experience extreme poverty. We won't be like earthworms. We still have a skeleton, eyes and ears, arms and legs. We can eat things like fruit. We don't have to eat dirt like an earthworm. If you complain about poverty, you become mired in feeling how unfortunate you are. And the earthworm will say, "Don't feel too sorry for yourself. Don't you still have arms and legs and bones? I don't have those things, yet I don't feel poor." The earthworm will shame us like this. One day a pig farmer came to see me. He was complaining. "Oh man, this year it's really too much. The price of feed is up, the price of pork is down. I'm losing my shirt." I listened to his laments. Then I said, "Don't feel too sorry for yourself, sir. If you were a pig, then you'd have good reason to feel sorry for yourself. When the price of pork is high, the pigs are slaughtered. When the price of pork is low, the pigs are still slaughtered." The pigs really have something to complain about. The people shouldn't be complaining. Think about this seriously, please. He was only worried about the prices he was getting. The pigs have a lot more to worry about. But we don't consider that. We're not being killed, so we can still try to find a way to get by. I really believe that if you listen to the Dhamma, contemplating it and understanding it, you can make an end of your suffering. You know what's right to do, what you need to do, what you need to use and spend. You can live your life according to Sila and Dhamma, applying wisdom to worldly matters. But most of us are far from that. We don't have morality or Dhamma in our lives, so our lives are filled with discord and friction. There's discord between husbands and wives, discord between children and parents. Children don't listen to their parents just because of a lack of Dhamma in the family. People aren't interested in hearing the Dhamma and learning anything. So instead of developing good sense and skillfulness, they remain mired in ignorance, and the result is lives of suffering.
Buddha taught Dhamma and set out the way of practice. He wasn't trying to make our lives difficult. He wanted us to improve, to become better and more skillful. It's just that we don't listen. This is pretty bad. It's like a little child who doesn't want to take a bath in the middle of winter because it's too cold. The child starts to stink so much that the parents can't even sleep at night. So they grab hold of the child and give him a bath. That makes the child mad, and he cries and curses the father and mother. The parents and child see the situation differently. For the child, it's too uncomfortable to take a bath in the winter. For the parents, the child's smell is unbearable. The two views can't be reconciled. The Buddha didn't simply want us to leave us as we are. He wanted us to be diligent and work hard in ways that are good and beneficial, and to be enthusiastic about the right path. Instead of being lazy, we have to make effort. His teaching is not something that will make us foolish or useless. He teaches us how to develop and apply wisdom to whatever we're doing, working, farming, raising a family, managing our finances, being aware of all aspects of these things. If we live in the world, we have to pay attention and know the ways of the world. Otherwise, we end up in dire straits. We live in a place where the Buddha and his Dhamma are familiar to us. But then we get the idea that all we need to do is to go and hear the teachings and then take it easy, living our lives as before. This is badly mistaken. How would the Buddha have attained any knowledge like that? There would never have been a Buddha. He taught about the various kinds of wealth. The wealth of human life, the wealth of the heaven realm, the wealth of Nibbana. Those with Dhamma, even though they are living in the world, are not poor. Even though they may be poor, they don't suffer over it. When we live according to Dhamma, we feel no distress when looking back on what we've done. We're only creating good karma. If we are creating bad karma, then the result later on will be misery. If we haven't created bad karma, we won't suffer such results in the future. But if we don't try to change our habits and put a stop to wrong actions, our difficulties go on and on, both the mental distress and the material troubles. So, we need to listen and contemplate, and then we can figure out where the difficulties come from. Haven't you ever carried things to the fields on a pole over your shoulders? When the load's too heavy in front, isn't that uncomfortable to carry? When it's too heavy at the back, isn't that uncomfortable to carry? Which way is balanced and which way is unbalanced? When you're doing it, you can see. Dhamma's like that. There's cause and effect. There is common sense. When the load is balanced, it's easier to carry. We can manage our lives in a balanced way with an attitude of moderation. Our family relations and our work can be smoother. Even if you aren't rich, you can still have ease of mind. You don't need to suffer over that. If a family is not hard-working, they fall on difficulty, and when they see others with more than they have, they start to feel covetousness, jealousy and resentment, and it may lead to stealing. Then the village becomes an unhappy place. It's better to work at benefiting yourselves and your families for this life and also for future lives. If your material needs are met through your efforts, then your mind is happy and at ease. And that's conducive to listening to Dhamma teachings, to learn about right and wrong, virtue and demerit, and to keep on changing your lives for the better. You can learn to recognize how doing wrong deeds only creates hardship, and you'll give up such actions and keep improving. Your way of working will change, and your mind will change too. From being someone ignorant, you'll become someone with knowledge. From being someone with bad habits, you'll become someone with a good heart. You can teach what you know to your children and grandchildren. This is creating benefit for the future by doing what is right in the present. But those without wisdom don't do anything of benefit in the present. They only end up bringing hardship upon themselves. If they become poor, they just think about gambling. And that finally leads them to becoming thieves. But we haven't died yet. So now is the time to talk about these things. If you don't hear the Dhamma when you're a human being, there won't be any other chance. Do you think the animals can be taught the Dhamma? Animal life is a lot harder than our life. Being born as a toad or a frog, a pig or a dog, a cobra or a viper, a squirrel or a rabbit. When people see them, they only think about killing or beating them, catching them, or raising them for food. We have this opportunity as humans. It's much better. We're still alive, so now is the time to look into this and mend our ways. If things are difficult, try to bear with the difficulty for the time being and live in the right way until one day you can do it. Practicing the Dhamma is like that. I'd like to remind you all of the need for having a good mind and living your lives in an ethical way. However you may have been doing things up to now, you should take a close look and see whether that is good or not. If you've been following wrong ways, give them up. Give up wrong livelihood.
Earn your living in a good and decent way that doesn't harm others and doesn't harm yourself or society. When you practice right livelihood, then you can live with a comfortable mind. We monks and nuns rely on lay people for all our material needs, and we rely on contemplation so that we're able to explain Dhamma to the lay people for their own understanding and benefit, enabling them to improve their lives. You can learn and recognize and remove whatever causes of misery and conflict there are. Make efforts to get along with each other, to have harmony in your relations rather than exploiting or harming each other. These days, things are pretty bad. It's hard for folks to get along. Even when a few people get together for a little meeting, it doesn't work out. They just look at each other's faces 3 times and they're ready to start killing each other. Why is it like this? It's only because people have no sila or dhamma in their lives. In the time of our parents, it was a lot different. Just the way people looked at each other showed that they felt love and friendship. It's not anything like that now. If a stranger shows up in the village as evening comes, everyone will be suspicious. What's he doing coming here at night? Why should we be afraid of a person coming into the village? If a strange dog comes into the village, nobody will give it a second thought. So is a person worse than a dog? It's an outsider, a strange person. How can anyone be an outsider? When someone comes to the village, we ought to be glad. They're in need of shelter, so they can stay with us, and we can take care of them and help them out. We'll have some company. But nowadays, there's no tradition of hospitality and goodwill anymore. There's only fear and suspicion. In some villages, I'd say that there aren't any people left. There are only animals. There's suspicion about everything. Possessiveness over every bush and every inch of ground, just because there is no morality, no spirituality. When there is no sila and no dhamma, then we live lives of unease and paranoia. People go to sleep at night, soon they wake up, worrying about what's going on, or about some sound they heard. People in the villages don't get along or trust each other. Parents and children don't trust each other. Husband and wife don't trust each other. What's going on? All of this is the result of being far from the Dhamma and having lives bereft of Dhamma. So everywhere you look, it's like this, and life is hard. If a few people show up in the village and request shelter for the night now, they're told to go and find a hotel. Everything is business now. In the past, no one would think of sending them away like that. The whole village would join in showing hospitality. People would go and invite their neighbors, and everyone would bring food and drink and share with the guests. Now, that can't be done. After people eat their dinner, they lock the doors. Wherever we look in the world now, this is the way things are going. It means that the non-spiritual is proliferating and taking over. We're generally not very happy, and we don't trust anyone very much. Some people even kill their parents now. Husbands and wives, they cut each other's throats. There's a lot of pain in society, and it's simply because of this lack of sila and dhamma. So, please try to understand this, and don't discard the principles of virtue. With virtue and spirituality, human life can be happy. Without them, we become like animals. Buddha was born in the forest. Born in the forest, he studied Dhamma in the forest. He taught Dhamma in the forest. Beginning with the discourse on the turning of the wheel of Dhamma, he entered Nibbana in the forest. It's important for those of us who live in the forest to understand the forest. Living in the forest doesn't mean that our minds become wild, like those of forest animals. Our minds can become elevated and spiritually noble. This is what the Buddha said. Living in the city, we live among distraction and disturbance. In the forest, there's quiet and tranquility. We can contemplate things clearly and develop wisdom. So we take this quiet and tranquility as our friend and helper. Because such an environment is conducive to Dhamma practice, we take it as our dwelling place. We take the mountains and caves for our refuge. Observing natural phenomena, wisdom comes about in such places. We learn from and understand trees and everything else, and it brings about a state of joy. The sounds of nature we hear don't disturb us. We hear the birds calling us as they will, and it's actually a great enjoyment. We don't react with any aversion, and we aren't thinking harmful thoughts. We aren't speaking harshly or acting aggressively towards anyone or anything. Hearing the sounds of the forest gives delight to the mind. Even as we're hearing sounds, the mind is tranquil. The sounds of people, on the other hand, are not peaceful. Even when people speak nicely, it doesn't bring any deep tranquility to the mind. The sounds that people like, such as music, are not peaceful. They cause excitement and enjoyment.
but there's no peace in them. When people are together and seeking pleasure in this way, it'll usually lead to mindlessness, aggressive and contentious speech, and the condition of disturbance keeps increasing. The sounds of humans are like this. They don't bring real comfort or happiness unless words of Dhamma are being spoken. Generally, when people live together in society, they're speaking out of their own interests, upsetting each other, taking offense and accusing each other, and the only result is confusion and upset. Without Dhamma, people naturally tend to be like that. The sounds of humans lead us into delusion. The sounds of music and the words of songs agitate and confuse the mind. Take a look at this. Consider the pleasurable sensations that come from listening to music. People feel it's really something great and it's so much fun. They can stand out in the hot sun when they're listening to a music and dance show. They can stand there until they're baked to a crisp, but still they feel like they're having fun. But then, if someone speaks harshly, criticizing or cursing them, they're unhappy again. This is how it is with the ordinary sounds of humans. But if the sounds of humans become the sounds of Dhamma, if the mind is Dhamma and we're speaking Dhamma, that's something worth listening to, something to think about, something to study and contemplate. That kind of sound is good, not in any excessive or unbalanced way, but in a way that brings happiness and tranquility. The ordinary sounds of humans generally only bring confusion, upset and torment. They lead to the arising of lust and anger, confusion, and they incite people to be covetous and greedy, to want to harm and destroy others. But the sounds of the forest aren't like that. If we hear the cry of a bird, it doesn't cause us to have lust or anger. We should be using our time to create benefit right now, in the present. This was the Buddha's intention. Benefit in this life, benefit in future lives. In this life, from childhood, we need to apply ourselves to study, to learn at least enough to be able to earn a living so that we can support ourselves and eventually establish a family and not live in poverty. But we generally don't have such a responsible attitude. We only want to seek enjoyment instead. Wherever there's a festival, a play, or a concert, we're on our way there, even when it's getting near harvest time. The old folks will drag the grandchildren along to hear a famous singer. Where are you off to, grandmother? Oh, I'm taking the kids to hear a concert. I don't know if grandma's taking the kids or the kids are taking her. It doesn't matter how long or difficult a trip it might be, and they go again and again. They say they're taking the grandchildren to listen, but the truth is they just want to go themselves. To them, that's what a good time is. If you invite them to come to the monastery to listen to Dhamma and learn about right and wrong, they'll say, you go ahead. I want to stay home and rest, or I've got a bad headache. My back hurts, my knees are sore, I really don't feel well. But if it's a popular singer or an exciting play, they'll rush to round up the kids and nothing bothers them then. That's how folks are. They make such efforts, yet all they're doing is bringing suffering and difficulty on themselves. They're seeking out darkness, confusion and intoxication on this path of delusion. Buddha is teaching us to create benefit for ourselves in this life, ultimate benefit, spiritual welfare. We should do it now, in this life. We should be seeking out the knowledge that will help us to do that, so that we can live our lives well, making good use of our resources, working with diligence in ways of right livelihood. After I was ordained, I started practicing, studying and then practicing, and faith came about. When I first started practicing, I would think about the lives of beings in the world. It all seemed very heartrending and pitiful. What was so pitiful about it? All the rich people would soon die and have to leave their big houses behind, leaving the children and grandchildren to fight over the estate. When I saw such things happening, I thought, this got to me. It made me feel pity towards the rich and poor alike, towards the wise and the foolish. Everyone living in this world was in the same boat. Reflecting on our bodies, about the condition of the world and the lives of sentient beings, brings about weariness and dispassion. Thinking about the ordained life, we've taken up this way of life to dwell and practice in the forest, and developing a constant attitude of disenchantment and dispassion, our practice will progress. Thinking constantly about the factors of practice, rapture comes about. The hairs of the body stand on end. There is a feeling of joy in reflecting on the way we live, in comparing our lives previously with our lives now. The Dhamma caused such feelings to fill my heart. I didn't know who to talk to about it. I was awake. Whatever situations I met, I was awake and alert. It meant I had some knowledge of Dhamma. My mind was illumined, and I realized many things. I experienced bliss, a real satisfaction, and a delight in my way of life.
To put it simply, I felt I was different from others. I was a fully grown, normal man, but I could live in the forest like this. I didn't have any regrets or see any loss in it. When I saw others having families, I thought that that was truly regrettable. I looked around and thought, how many people can live like this? I came to have real faith and trust in the path and practice I'd chosen, and this faith has supported me right up to the present. In the early days of Wat Pah Pong, I had 4 or 5 monks living here with me. We experienced a lot of difficulties. From what I can see now, most of us Buddhists are pretty deficient in our practice. These days, when you walk into a monastery, you see only the kutis, the temple hall, the monastery grounds, and the monks. But as to what is really the heart of the Buddha's way, the Buddha's sasana, you won't find that. I've spoken about this often. It's a cause for sadness. In the past, I had one Dhamma companion who became more interested in study than in practice. He pursued the Pali and Abhidhamma studies, going to live in Bangkok after a while. And last year, he finally completed his studies and received a certificate and titles commensurate with his learning. So, now he has a brand name. Here, I don't have any brand name. I studied outside the models, contemplating things and practicing, thinking and practicing. So, I didn't get the brand label like the others. In this monastery, we had ordinary monks, people who didn't have a lot of learning, but who were determined to practice. I originally came to this place at the invitation of my mother. She was the one who cared for me and supported me since my birth. But I hadn't repaid her kindness, so I thought that this would be a good way to do that, coming here to Wat Pah Pong. I had some connection with this place. When I was a child, I remember hearing my father saying that Ajahn Sao, who was the teacher of Venerable Ajahn Mun, came to stay here in this forest. My father went to hear the Dhamma from him. I was a child, but my memory stayed with me. It stuck in my mind always. My father was never ordained, but he told me how he went to pay respects to this meditation monk. It was the first time he saw a monk eating out of his alms bowl, putting everything together in the one alms bowl, rice, curry, sweets, fish, everything. He'd never seen such a thing, and it made him wonder what kind of a monk this might be. He told me about this when I was a little child. That was a meditation monk. Then he told me about getting Dhamma teachings from Ajahn Sao. It wasn't the ordinary way of teaching. He just spoke what was on his mind. That was the practice monk who came to stay here once. So when I went off to practice myself, I always retained some special feeling about this. When I would think about my home village, I always thought about this forest. Then, when the time came to return to this area, I came to stay here. I invited one high-ranking monk from Pipun district to come and stay here too, but he said he couldn't. He came for a while and said, "This is not my place." He told this to the local people. Another Ajahn came to stay here for a while too and left, but I remained. In those days, this forest was really remote. It was far from everything, and living here was very hard. There were mango trees the villagers had planted here, and the fruit often ripened and went bad. Yams were growing here too. They would just rot in the ground, but I wouldn't dare to take any of it. The forest was really dense. When you arrived here with your bowl, there wouldn't be any place to put it down. I had to ask the villagers to clear some spaces in the forest. It was a forest that people didn't dare enter. They were very afraid of this place. Nobody really knew what I was doing here. People didn't understand the life of a meditation monk. I stayed here like this for a couple of years, and then the first few monk disciples followed me here. We lived very simply, quietly in those days. We used to get sick with malaria, all of us nearly dying. But we never went to a hospital. We already had our safe refuge, relying on the spiritual power of the Lord Buddha and his teachings. At night, it would be completely silent. Nobody ever came in here. The only sound you heard was the sound of the insects. The kutis were far apart in the forest. One night, about 9 o'clock, I heard someone walking out of the forest. One monk was extremely ill with fever and was afraid he was going to die. He didn't want to die alone in the forest. I said, "That's good. Let's try to find someone who isn't ill to watch the one who is. How can one sick person take care of another?" That was about it. We didn't have medicine. We had boropet, an extremely bitter medicinal vine. We boiled it to drink. When we talked about preparing a hot drink, quote unquote, in the afternoon, we didn't have to think much about it. It only meant boropet. Everyone had fever and everyone drank boropet. We didn't have anything else. We didn't request anything of anyone. If any monks got really sick, I told them, "Don't be afraid.
Don't worry, if you die, I'll cremate you myself. I'll cremate you right here in the monastery. You won't need to go anywhere else. This is how I dealt with it. Speaking like this gave them strength of mind. There was a lot of fear to deal with. Conditions were pretty rough. The lay people didn't know much. They would bring us bara, fermented fish, a staple of the local diet. But it was made with raw fish, so we didn't eat it. I would stir it and take a look and see what it was made of, and then just leave it sitting there. Things were very hard then, but we don't have those kind of conditions these days. Nobody knows about them. But there is some legacy remaining in the practice that we have now, and the monks from those days were still here. After the rains retreat, we would go Tudong right here within the monastery. We went and sat deep in the quiet of the forest. From time to time we would gather. I would give some teaching, and then everyone went back into the forest to continue meditating, walking and sitting. We practiced like this in the dry season. We didn't need to go wandering in search of forests to practice. We didn't need to go wandering in search of forests to practice in, because we had the right conditions here. We maintained the Tudong practices right here. Now, after the rains, everyone wants to take off somewhere. The result is usually that their practice gets interrupted. It's important to keep at it steadily and sincerely so that you come to know your defilements. This way of practice is something good and authentic. In the past, it was much harder. It's like the saying that we practiced to no longer be a person. The person should die in order to become a monk. We adhered to the vinaya strictly, and everyone had a real sense of shame about their actions. When doing chores, hauling water, or sweeping the grounds, you didn't hear monks talking. During bowl washing, it was completely silent. Now, some days I have to send someone to tell them to stop talking to find out what all the commotion is about. I wonder if they're boxing out there. The noise is so loud I can't imagine what's going on. So, again and again, I have to forbid them to chat. I don't know what they need to talk about. When they've eaten their fill, they become heedless because of the pleasure they feel. I keep on saying, when you come back from the alms round, don't talk. If someone asks why you don't want to talk, I tell them, my hearing is bad. Otherwise, it becomes like a pack of barking dogs. Chattering brings about emotions. You can even end up in a fist fight, especially at that time of the day when everyone's hungry. The dogs are hungry, and the defilements are active. And I'll do the Hindi translation. इसका टॉक का टाइटल है होल हार्टेड ट्रेनिंग, पूरी मन से ट्रेनिंग करना। घर में और हर कम्युनिटी में, चाहे हम गांव में रह रहे हो या शहर में, जंगल में या पहाड़ों में, हम उसी तरह का सुख और दुख अनुभव करते हैं। लोगों के पास कोई शरण नहीं है, जगह नहीं है जहाँ पे हम चित्त की चेतना डेवलप कर सके। और इस तरह से आध्यात्मिक निर्धनता हम अनुभव करते हैं, क्योंकि हमारे पास ठीक समझ नहीं है, कमिटमेंट नहीं है कि आध्यात्मिक जीवन कैसा है। बचपन से लेकर आज तक हम केवल सुखी और इंद्रिय सुखी खींचने की ओर ही भागते रहे हैं। हमने कभी सोचा नहीं कि किस तरह के खतरे हमारे जीवन में हैं अगर हम परिवार में रहेंगे और इस तरह का जीवन जिएंगे। यदि हमारे पास जमीन ना हो, घर ना हो, बाहर का कोई शरण ना हो, और हमारे जीवन जो है दुख से, कठिनाई से भरा हुआ होता है। लेकिन अगर अंदर की जानकारी ना हो, शील नहीं हो, धर्म ना हो जीवन में,
धर्म की शिक्षा सुनने न जाते हैं तो हमारे जीवन में बहुत थोड़ी सी प्रज्ञा रहती है, सब कुछ अवनति की ओर ही चला जाता है। हमारे महान आचार्य भगवान बुद्ध की सबके प्रति मैत्री भावना थी। उन्होंने लड़कों और लड़कियों को भिक्षु बनने की ओर प्रेरित किया ताकि वो सत्य को पहचान सके, ताकि लोगों को पता चल सके कि किस तरह से प्रसन्न जीवन जिया जा सकता है, किस तरह से समय का आजीविका हो सके, किस तरह से हम सब कामों में प्रमाद रहित जीवन जी सके। लेकिन अगर हम दोनों ही तरह से लैग कर रहे हो, बाहर के जीवन में, मटेरियल जीवन में भी और अंदर स्पिरिचुअल जीवन में भी, तो समय बीतता जाता है और दुख बढ़ता जाता है और हम धर्म से और दूर चले जाते हैं। केवल मनुष्य के साथ में आ जाए फिर भी हमारा मन नहीं करता कि हम वहां जाएं। भगवान बुद्ध ने सिखाया कि हम चाहे कितने भी गरीब हों, हम अपने मन को गरीब होने नहीं देना चाहिए, अपनी प्रज्ञा को भूखा नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हमारे खेत जो है घर बाढ़ से डूब जाए कि हम कुछ भी ना कर सके, तो भगवान ने कहा कम से कम इतना तो करो कि अपने मन को, अपने चित्त को बाढ़ में न डूबने दो। इसका अर्थ है कि हम धर्म से विलुप्त ना है। इंद्रिय सुख का एक बाढ़ है, जो अविद्या की बाढ़ है, भाव की बाढ़ है, दृष्टि की बाढ़ है, और ये चार बाढ़ हमारे चित्त को ओवरवेलम कर लेती हैं। वो बाहर की पानी की बाढ़ से भी बहुत खतरनाक है, क्योंकि अगर हमारे खेत डूब भी जाए, घर भी जल जाए, फिर भी हमारा चित्त अगर ठीक हो, हमारा शीत पुष्ट हो, दम हो, तो धीरे धीरे हम अपनी आजीविका किसी तरह से कर सकते हैं, फिर अपना जमीन और घर बना सकते हैं। जब हमारी आजीविका होती है और तो हमारा मन प्रसन्न रह सकता है, हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। अगर हम एक दूसरे के लिए भोजन और कपड़े शेयर करते हैं तो मैत्री का भाव है। सर माफ कीजिए, हेलो सर, माफ कीजिए सर, चैट पर सभी लोग को शायद सुना ही नहीं आ रहा है, सभी लोग मेंशन कर रहे हैं कि क्रैकिंग वॉइस आ रही है। अच्छा, शुरुआत से आ रही है सर। अच्छा, मैं शुरू से करता हूँ। हेलो, अभी आवाज साफ है या अभी भी कट रही? अभी थोड़ी साफ है शायद। अच्छा, तो आप कृपया बता दीजिएगा मुझे। बिल्कुल। मैं कहीं और हूँ ना, तो अरेंजमेंट उतने आइडियल नहीं हो पा रहे। जी जी शुरू से करता हूँ, कोई बात नहीं। हर घर में, हर कम्युनिटी में, चाहे हम शहर में रहे, चाहे गांव में, चाहे जंगल में, चाहे पर्वतों पे, हम सुख और दुख का अनुभव करते हैं। हम में से कई के पास ठहरने की एक शरण नहीं होती जहाँ पे कि हम चित्त के अच्छे क्वालिटीज को डेवलप कर सकें। इस तरह की आध्यात्मिक गरीबी हम महसूस करते हैं क्योंकि हमारे में धर्म के प्रति उचित कमिटमेंट नहीं है। बचपन से लेकर बड़े होने तक हमने केवल इंद्रिय सुख की खोज की है, उन्हीं के पीछे भागते रहे।
यदि हमारे पास घर ना हो, जमीन ना हो, बाहर की शरण ना हो, तो हमारे जीवन मुश्किल में बीतता है। और अगर फिर इसके ऊपर और अगर इसके अतिरिक्त धर्म, मन में शील ना हो, धर्म ना हो, तो हमारा जीवन और कठिनाई में पड़ जाता है। और क्योंकि जीवन इस तरह से प्रज्ञा विहीन है, तो और नीचे की ओर चला जाता है। भगवान बुद्ध ने के प्रति, के लोगों के प्रति बहुत महत्व थे। इसके लोगों को उन्होंने मोटिवेट किया कि वो भिक्षु बने और सत्य का साक्षात्कार करें, ताकि बाकी लोग भी देख सकें किस तरह से एक सुखी जीवन जिया जा सकता है। लेकिन जब हम दोनों ही तरह से लैक करते हो, बाहर के मटेरियल लाइफ में भी और अंदर की स्पिरिचुअल लाइफ में भी, तो समाज में बहुत भ्रम और गरीबी एक तरफ से फैलती है, और दूसरी तरफ से हम धर्म के प्रति भी विमुख होते चले जाते हैं। क्योंकि परिस्थितियां मुश्किल है, डिफिकल्ट है, तो हम धर्म में भी इंटरेस्ट नहीं रहते। अगर पास में एक बौद्ध विहार भी हो, तब भी हम वहाँ जाना नहीं चाहते, क्योंकि हम अपनी गरीबी और दुख परेशानियों में इतने डूबे रहते हैं। भगवान बुद्ध ने लेकिन सिखाया था कि हम चाहे कितने भी गरीब क्यों ना हो, अपने दिल को, अपने हार्ट को, अपने चित्त को प्रज्ञा से वंचित न रखें। अगर हमारे खेत, खलिहान, घर पानी में डूब भी जाए, तब भी हम अपने चित्त को न डूबने दें। अर्थात हम धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा, अपना ज्ञान जो है बढ़ाए जाते हैं। 4 तरह के भाड़ कहे जाते हैं, भव हो, तिट्ठी हो, काम हो और अविद्या हो। ये चारों जो है हमारे चित्त को ओवरवेलम कर लेते हैं। ये हमारे खेतों को पानी से डूबने से भी अधिक कष्टदायक है, क्योंकि अगर खेत डूब जाए तो उसको हम मेहनत करके कमा के हमको ले सकते हैं, लेकिन चित्त डूब जाए तो फिर कोई समाधान नहीं रह पाता। जब हमारी एक अच्छी आजीविका हो, घर हो, तो हमें और हमें एक दूसरे की मदद करने की आदत, और दूसरों के साथ अपना भोजन, कपड़े वगैरह शेयर करें, तो ये मैत्री का काम होता है। और इस तरह से एक अच्छा जीवन जीने का मौका मिलता है। उन्हीं चीज़ों को केवल लाभ के लिए बेचना से ये शेयर करना कई मायने में अच्छा है। अगर हम अपने चित्त को कमिटमेंट कर लें और सही रास्ते पे चलें, तो कोई बहुत मुश्किल बात नहीं होनी चाहिए। हम बहुत गरीबी नहीं महसूस करेंगे, हम एक मिट्टी के कीड़े की तरह नहीं हो जाएंगे, हमारे शरीर फिर भी रहेगा। अगर आप हमेशा अपनी गरीबी के बारे में ही चिंता करते रहेंगे और अपना मन में यही बात रखेंगे आप कितने भाग्यहीन हैं, तो फिर तो जो हर सवाल में वो भी कहेगा अपने बारे में इतना, अपने को इतना बुरा मत समझो, तो अभी तुम्हारे हाथ पैर तो है, फिर तो ये भी नहीं है, फिर भी मैं गरीबी नहीं महसूस करता। इस प्रकार एक अर्शवाम भी हमको शर्मिंदा कर सकता है। एक बार एक सूअरों को पालने वाला मेरे पास आया और कंप्लेन करने लगा, अरे बनते कितना कठिनाई है इस साल, तो भोजन जो है सूअरों का, उसका प्राइस बढ़ गया है, और जो सूअर के मीट है उसका प्राइस घट गया है, मैं तो बुरी हालत हो गई है। मैंने उसकी रोना धोना सुना, बाद में मैंने कहा अपने बारे में इतना परेशान मत हो, जब सूअर के मीट का दाम ज़्यादा होता है तब भी सूअर मारे जाते हैं, जब उनका दाम कम होता है तब भी सूअर मारे जाते हैं। तो सूअरों को तो है, अगर सूअर कुछ कंप्लेन करे तो बात समझ में आती है, लोगों को कंप्लेन करने की कोई खास आवश्यकता समझ नहीं आती।
मैं सच में विश्वास करता हूँ कि अगर आप धर्म को ठीक से समझें, उसको विचार विमर्श करें, उसको सोचने का समझने का प्रयास करें, तो आप दुख से मुक्ति पा सकते हैं। क्योंकि आपको मालूम पड़ेगा कि क्या ठीक है, क्या आपको आवश्यकता है, क्या आपको आवश्यकता नहीं है। आप जीवनशील और धर्म के अनुसार जी सकते हैं। प्रज्ञा को सब सांसारिक चीजों में भी उपयोग कर सकते हैं। दुर्भाग्य से अधिकतर लोग उससे बहुत दूर हैं, शील से बहुत दूर है, और इसलिए हमारे जीवन में तनाव और झगड़ा ही भरा रहता है। आजकल पति पत्नी में झगड़ा, बच्चों पिता माता पिता में झगड़ा, क्यों? क्योंकि धर्म परिवार में रहा नहीं। भगवान ने धर्म सिखाया और हमें साधना का मार्ग भी सिखाया। वो हमारे जीवन को कष्टदायक नहीं बनाना चाहते थे, वो हमारे जीवन को सुधारना चाहते थे। बस यही बात है कि हम ठीक से सुनते नहीं हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। ये उसी तरह है जैसे कोई बच्चा कई दिनों से नहीं नहा रहा और सर्दी के दिनों में और वो चीखता है मुझे नहीं नहाना है, हालांकि वो बदबू भी आ रही है, और जब पेरेंट्स उसको हाथ पकड़ के नहला देते हैं तो काफी नाराज होता है। क्योंकि पेरेंट्स जो है वो देखते हैं कि माता पिता समझते हैं कि ये सिचुएशन ठीक नहीं है, जब बच्चा उसको दूसरी तरह से देखता है। तो ये दो तरह के व्यू जो आपस में उनको सामंजस्य नहीं कर सकते। भगवान बुद्ध भी ये नहीं चाहते थे कि हम जैसे हैं वैसे भी पड़े रहें। वो हमें डिलीजेंट और मेहनती बनाना चाहते थे, ताकि हम ठीक मार्ग में चले, आलसी न बने। और उनको सिखाते हैं कि जो भी हम काम कर रहे हैं, खेती का, बच्चे का पालने का, पैसे का, हर चीज में हम अपनी प्रज्ञा का इस्तेमाल करें। हम यहाँ ऐसे स्थान में रह रहे हैं जो भगवान की शिक्षा और टीचिंग से हम फेमिलियर हैं। हम बस, लेकिन हमारा ये आइडिया हो गया कि हम भगवान की शिक्षा सुन ली और फिर अपना जीवन जैसे जी रहे वैसे जीते रहे। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। अगर भगवान बुद्ध भी ऐसा सोचते तो कैसे हमारे को कैसे बुद्धि प्राप्त करते? उन्होंने संपत्ति के बारे में सोचा, स्वर्ग के बारे में सोचा, निर्वाण के बारे में सोचा। जो लोग धर्म से युक्त हैं, अगर वो सांसारिक रूप में गरीब भी हो तो भी उनको कष्ट नहीं होगा कि जिस तरह का हम जीवन जी रहे हैं वो ठीक है कि गलत है, क्योंकि वो सब अच्छे कर्म ही बना रहे हैं। अगर हम बुरे कर्म कर रहे हैं तो उसका परिणाम अंत में बुरा ही होगा। अगर हमने कोई बुरा काम नहीं किया है तो हम भविष्य में कोई कष्ट नहीं भोगेंगे। तो इसलिए जब हम सुनते हैं धर्म को तो उस पर विचार करें और सोचें कि ये परेशानियां जो है जीवन में कहाँ से आई हैं। क्या आपने अपने शायद जब खेत में जाते हैं तो चीजें आप अपने कंधों पे उठा कर नहीं ले जाते? कितना भारी वजन होता है वो, कितना अनकंफर्टेबल होता है। आगे ज्यादा हो पीछे ज्यादा हो तो ये अनकंफर्टेबल हो जाता है। किस तरह से हम बैलेंस कर सकते हैं, किस तरह से बैलेंस नहीं कर सकते हैं, ये आप अपने अनुभव से जानते हैं। धर्म भी वैसा ही है, ये कॉमन सेंस की बात है। जबकि हमारा बोझ जो है बैलेंस हो जाए तो उसको कैरी करना आसान हो जाता है, हमारा जीवन चलना आसान हो जाता है। चाहे आप अमीर ना भी हो तब भी आपका मन शांत रहता है और आप ज़्यादा परेशान नहीं होते। अगर परिवार में लोग काम मेहनत करने वाले ना हो तो स्वाभाविक बात है कि वो दिक्कत में पड़ेंगे। और जब वो दूसरों को देखते हैं कि उनके पास बहुत अधिक है तो ईर्ष्या से परेशान होते रहते हैं, जिसके कारण हो सकता है वो चोरी भी करने लगे। और जब गांव में इस तरह के लोग हैं तो वो एक दुखी जगह बन जाती है। तो अपने परिवार का ख्याल रखना, अपने लिए ख्याल रखना, ये अच्छी बात है। तो अपनी मेहनत करें इस तरह से।
अगर आपकी सांसारिक जो बहुत आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो रही है एफर्ट से, तो आपका मन प्रसन्न होता है और फिर आप धर्म सुनने की ओर प्रेरित हो सकते हैं। क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या कुशल है, क्या अकुशल है, वो सीख सकते हैं। आप समझते हैं किस तरह से गलत काम करने से कष्ट होते हैं। इस तरह से आपका सोचने का तरीका बदलता है और फिर आप बच्चों और अपने पोते पोतियों को सिखा सकते हैं कि धर्म कैसे क्या है, जो सही जीवन जीना कैसा है, ताकि आप केवल इस समय के लाभ के लिए नहीं, भविष्य के लाभ के लिए भी लोगों को सिखा सकते हैं। जिनमें धर्म नहीं होता वो दोनों ही तरह से कष्ट में रहते हैं, गरीब हो जाते हैं, युवा खेलते हैं और फिर अंततः चोरी बन जाते हैं। हम सब मानव हैं और अभी जीवित हैं, तो आवश्यक है कि हम धर्म को इस समय सुने। मनुष्य रूप में आए हैं तो धर्म सुने। अगर हम जब पशु योनि में आए तो फिर बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि वो धर्म नहीं सुन सकते। क्योंकि अगर लोग किसी मेंढक को, सुअर को या सांप को या खरगोश को देखते हैं तो यही सोचते हैं किस तरह या तो उनको मारा जाए या उनको पकड़ा जाए और खाया जाए। मनुष्य के रूप में हमारा जन्म है, तो एक हमारे साथ एक अपॉर्चुनिटी है कि हम जीवित हैं और हम अपने रास्ते अपने तार तरीके बदल सकते हैं, सुधार सकते हैं। अगर जीवन में दिक्कत है तो उसको सहन करिए, लेकिन सही मार्ग पर चलते रहिए। अपने शीलवान जीवन बहुत आवश्यक है। जो कुछ भी आप अभी तक कर रहे हैं उसको गहराई से देखिए और देखिए कि वो ठीक था कि नहीं था। अगर गलत तरीके की है तो उनको छोड़ दीजिए, समय का आजीविका अपनाइए। हम भिक्षु और भिक्षुनियाँ गृहस्थों पे अपने मटेरियल नीड्स के लिए डिपेंड करते हैं और हम उस आधार पे चिंतन कर सकते हैं, धर्म सीख सकते हैं, आपको सिखा सकते हैं। इस तरह से हम एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं और हमारे रिलेशनशिप आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करने के, भला करने के होते हैं। आजकल दुर्भाग्य से चीजें खराब हो गई हैं। लोग आपस में दो लोग भी इकट्ठे होकर सामान्य मीटिंग भी नहीं कर सकते, झगड़ा होने शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि लोगों में शील और धर्म नहीं है। हमारे माता पिता के समय पे परिस्थितियां बिल्कुल अलग, काफी अलग थी। लोग एक दूसरे के साथ प्रेम और मैत्री भाव से रहते थे। अभी तो आज गाँव में कोई अनजान व्यक्ति आ जाए तो कोई उसको पूछता नहीं, उसको कहेगा तुम जाकर होटल में रहो, क्योंकि आतिथ्य की बात सारी समाप्त हो गई। शील धर्म की बातें भूल गए लोग। रात को सोते हैं तो सोचते हैं तो कहीं भी जरा भी शोर हो जाए तो हम जाग जाते हैं, क्या हो रहा है, एक दूसरे पर विश्वास समाप्त हो रहा है। ये सब धर्म से विमुख होने के कारण है। तो आप सबको देखना चाहिए इसके बारे में। आजकल तो सब कुछ बिजनेस हो गया है। आजकल पुराने समय में कोई गांव में आता था तो कभी ये सोच नहीं सकते थे कि उसको कहेंगे कि तुम होटल चले जाओ। जहाँ भी आप संसार में देखो उसी तरह का जीवन चल रहा है, क्योंकि अध्यात्म की कमी रह गई है और हम एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते और इसलिए प्रसन्न भी नहीं होते। आजकल तो लोग अपने माता पिता तक को, पतियां पत्नी को, पतियों को भी मार देती हैं। बहुत दुख है समाज में, क्योंकि शील और अध्यात्म जीवन से गायब हो गए हैं। भगवान बुद्ध जो है जंगल में उत्पन्न हुए, जंगल में धर्म सीखा और उन्होंने धर्म सिखाना शुरू किया और वहीं पर निब्बान को प्राप्त किया। तो हम जो लोग यहाँ जंगल में रहते हैं उनको ये बात समझनी चाहिए कि जंगल में रहने का मतलब ये नहीं कि हमारे मन भी जंगली हो जाए, जैसे जंगली जानवर। हमारे मन को
ऊपर उठा सकते हैं, कुशल बना सकते हैं। क्योंकि शहर में रहने में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन रहते हैं, जंगल में शांति रहती है, तो जो पक्षी हैं उनकी आवाज़ जो उनको विचलित नहीं करती, प्रसन्न रहना उनसे चित्त को प्रसन्न ही करती है, उसके प्रति कभी राग या द्वेष नहीं जागता। और हम यहाँ एक दूसरे के प्रति भी कोई एग्रेसिवली बात नहीं करते। इसके विपरीत जो लोगों की वाणी होती है आपस में, वो बहुत कम ऐसा होता है कि शांतिपूर्ण हो। उनकी वाणी से शांति नहीं निकलती। उनके जो संगीत है वो भी शांतिपूर्ण नहीं होता, उससे भी एक्साइटमेंट होती है, कोई शांति नहीं आती। तो जब इस तरह के लोग इकट्ठे होते हैं तो सजग है कि सजगता समाप्त हो जाती है और आपस में कठोर वाणी और एग्रेसिव बिहेवियर ही होता है। तो इसलिए मनुष्यों की आवाज़ें बहुत कम होता है जो उसमें सच्चा प्रसन्नता और शांति मिले। तभी वो भी तब होता है जब धम्म की बात हो रही है। लेकिन आजकल जब लोग जुड़ते हैं तो ऐसी बातें नहीं करते, वो केवल एक दूसरे को ब्लेम करना, कंप्लेंट करना यही चलता रहता है। इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य के वाणी से जो है भ्रम ही पैदा होते हैं, मोह ही जागता है उनका। जिसको वो म्यूजिक कहते हैं वो भी हमें भ्रमित ही करता है। लोग पता नहीं कैसे सोचते हैं कि बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत फन है धूप में खड़े होकर सुनना और डांस करना। लेकिन अगर कोई उनको ज़रा भी क्रिटिसाइज कर दे तो तुरंत गालियाँ देने लगेंगे, लड़ने शुरू कर देंगे। स्पष्ट है कि मनुष्यों के मानस जो कैसे हैं। वो उस तरह की वाणी अच्छी है जिससे कि मन शांति हो, न प्रसन्नता जागे, ना कि कंफ्यूजन और दुर्भाव। सामान्य वाणी लोगों की जो है बस केवल गुस्सा, कंफ्यूजन और वासना ही बढ़ाने की कोशिश करती है। लेकिन जंगलों में जो आवाज़ें आती हैं वो ऐसी नहीं है। पर एक पशु की आवाज़ जो है वो हमको गुस्सा या वासना नहीं पैदा करती। यही भगवान बुद्ध का इंटेंशन था कि हम जंगलों में रहेंगे तो शांति अनुभव करेंगे। वास्तव में हमें बचपन से ही धर्म को अपने जीवन में लगाना चाहिए, ताकि जब हम बड़े हों तो हम अपनी आजीविका जी सकें, खरीद बना सकें और एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें, फैमिली भी बनाए रहें तो गरीबी में ना रहें। धर्म की बात, धर्मानुकूल जीवन जिए। लेकिन अगर हम सिर्फ एक्साइटमेंट ही के पीछे दौड़ते रहेंगे तो वो हमको धर्म से कई बार विमुख कर देता है। एक बुढ़िया भी अपने पोते पोतियों को ले जाके म्यूजिक कंसर्ट में सुनाना चाहती है। पता नहीं चलता कि वो खुद जाना चाहती है कि वो कहती तो है कि मैं बच्चों को सुनाना चाहती हूँ। और उससे कहो कि चलो धर्म सुनने के लिए बिहार, बौद्ध विहार चले, तो कहेगी अरे मैं थकी हुई हूँ, बूढ़ी हो गई हूँ, मैं बैठ नहीं सकती, घुटनों में दर्द है। आजकल लोग ऐसे हो गए हैं। वो सारा जो एफर्ट है अपना केवल दुख बढ़ाने में ही लगा रहे हैं, अंधकार की ओर ही बढ़ना चाहते हैं। जब मैं भिक्षु बना और मैंने साधना शुरू की, पहले कुछ पढ़ाई, साधना, तो इस प्रकार से मन में श्रद्धा जागी और मैं देखता था लोगों के जीवन के बारे में। तो बहुत कष्ट होता था कि कैसा कष्टदायक जीवन सब लोग जी रहे हैं। तो लगा कि भिक्षु का लाइफ जीवन जो है वो सचमुच में बहुत अच्छा है। जंगल में जीना, संसार के प्रति निवेदा भाव। और जब मैं ऐसे साधना करता था तो धीरे धीरे
मैं चित्त में प्रीति जागने लगी, प्रसन्नता जागने लगी, सुख जागने लगा। और जब मैं अपने पुराने जीवन से कंपेयर करता था खास तौर पे, तो और सुख प्रसन्नता जागती थी। तो मुझे स्पष्ट लगता था कि मेरा जीवन दूसरों से काफी भिन्न है, क्योंकि मैं जीवन काफी जंगल में इस तरह से एकांत में रह सकता था। मुझे कोई उस बात पे दुख नहीं होता था। जब मैं दूसरों को परिवार में देखता था और उनके स्थिति समझता था, तो बहुत मुझे उनके प्रति करुणा जागती थी। वाट पॉपॉन्ग की शुरुआत के समय में हमारे पास बहुत थोड़े से मॉन्क्स थे और बहुत कठिनाइयां हमने झेली थी। आजकल जो बुद्धिस्ट हैं वो लोग अपनी साधना में काफी कमजोर हैं। उन दिनों तो आप जिन दिनों जब भी आप जाए सिर्फ कुटिया देखते हैं, हॉल देखते हैं, मोनेस्ट्री ग्राउंड देखते हैं, लेकिन जो बुद्ध शासन है, जो सचमुच भगवान की शिक्षा का अंतरतम भाग है, वो काफी कम हो गया है। इससे दुख होता है। जब पहले हम वाट पवांग में थे तो मेरा सिर्फ एक ही साथी था। एक ऐसा भी साथी था जो बहुत पाली और अभी धम्मा में बहुत इंटरेस्टेड हो गया, बैंकॉक चला गया, पढ़ाई की, सर्टिफिकेट लेके आया और उस वहीं अब रहता है। उसने अपना ब्रांड नेम बना लिया। हमारा कोई ब्रांड नेम नहीं है। हम सिर्फ परिस्थितियों पे चिंतन करते रहते हैं और साधना करते हैं। जब मैं शुरू में यहाँ आया तो अपनी माता के कहने पे आया, क्योंकि माता ने मेरा बहुत लालन पालन किया था। मैं उनकी उनकी करुणा के प्रति कृतज्ञ था। मेरा यहाँ से कुछ कनेक्शन भी था, क्योंकि जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे पिता मुझे यहाँ पे लाते थे, कहते थे यहाँ अजान साहब आए थे रहने के लिए। अजान साहब जो है वो अजान मन के भी टीचर थे। मेरे पिता उनके साथ उनका धर्म शिक्षा सुनने जाते थे और मैं भी उनके साथ चला जाता था, और ये याददाश्त मेरे साथ टिकी रही आज तक। तो मैं देखता था कि वो देखते थे कि वो एक ही बाउल में सब कुछ, चावल, करी, मीठा, खट्टा सब मिला के खाते थे। मैंने कभी ये देखा नहीं था, सोचता था कि किस तरह के भिक्षु हैं। और फिर मुझे बताया गया कि एक मेडिटेशन माउंट। तो जब मैं सब खुद ध्यान करने लगा तो वो बात मेरी याददाश्त हमेशा बनी रही। तब मैंने जब यहाँ आया वापस भिक्षु मोनेस्ट्री बनाई, तो मैंने एक उच्च रैंक वाले भिक्षु को बुलाया यहाँ, आप पे रही, लेकिन उन्हें रह नहीं पाए। उन्होंने कहा ये मेरे लिए जगह उपयुक्त नहीं है। एक और अजान आए, वो भी बहुत थोड़े दिन रहे, तो मैं यहाँ अकेला रहा कई दिनों तक, लंबे समय तक। यहाँ पे आम के पेड़ थे, फल थे, गिर जाते थे, लेकिन मैंने कभी खाए नहीं, क्योंकि मेरे नहीं थे। जंगल बहुत घना जंगल था। आप अगर अपने बाउल को भी रखना चाहते थे, उसके लिए भी रखने की जगह नहीं थी। तो मैंने गांव वालों से कहा कि थोड़ी स्थान बना दीजिए, फिर कुटी बना साफ कर दीजिए, कुटी बना दीजिए। तो इस प्रकार से अब रहने लगे बड़े सामान्य तरह से। दूर कुटियाँ बहुत दूर दूर थी। ऐसा था जैसे हम सचमुच में गहरे जंगल में रह रहे हैं। एक बार मैंने देखा कि बहुत देर रात को कोई जंगल से बाहर जा रहा है। मैंने देखा कि एक मॉन्क जो है हमारा साथी, बहुत बुखार है उसे, और उसे लगा कि कहीं वो मर ना जाए अकेला। तो मुझे लगा हाँ ये बात तो है, तो हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। हमारे पास कोई दवाई नहीं थी, तो एक वहाँ का जो लोकल हर्ब है उसी को पानी में उबाल के उसको हम पीते थे। वही बोरा पेट उसको कहते हैं, उसको ही हमारा आफ्टरनून ड्रिंक होता था, क्योंकि वो बुखार भी ठीक करता था। और जब कोई मंक बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता था तो मैं उनको कहता था चिंता मत करो, अगर तुम मर जाओगे तो मैं तुम्हें यहीं क्रिमेट करूँगा अपने हाथों से, तुम्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। तो इस तरह से मेरी बात सुनने से उनको मन में स्ट्रेंथ आती थी। परिस्थितियाँ बहुत कठिन थी। जो गृहस्थ लोग हमको जानते नहीं थे ज़्यादा, वो कभी कभी फिश का अचार बाहर होता है वो ले आते थे, जो हम खाते नहीं थे, क्योंकि वो जीवित
मछली से बनाया जाता है। तो सच में इसमें कठिनाइयाँ बहुत थी, जब आजकल जैसी स्थितियाँ वैसी परिस्थितियाँ नहीं थी, लेकिन हम साधना में बहुत सजग रहते थे। हमें कहीं टुडाउन जाने के लिए भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम तो सचमुच में जंगल में ही रह रहे थे। लोग जो टुडाउन करते हैं इसलिए कि उनको अपनी कठिनाइयाँ, जीवन में कठिनाइयाँ आए, वो देख पाए, अपने मन के विकारों को हैंडल करते हैं। हमें ये सब करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम सामान्यतः स्वाभाविक रूप से हमारा जीवन ऐसा ही था। हम विनय को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे, और अपने काम करते हुए, सफाई करते हुए, पानी को ढोते हुए, सभी मॉन्क्स जितने थे चुपचाप काम करते थे, कोई एक दूसरे से बात नहीं करता था। आजकल तो परिस्थिति बदल गई है। देखता हूँ कि खाना खाने के बाद लोग बाउल साफ करते हैं तो इतनी बातें करते हैं, समझ नहीं आता वो क्या बात करना चाहते हैं। तुम कोई जो कहते थे मैं उनसे कि अगर तुम भिक्षाटन पे जाओ और कोई तुमसे बात करना चाहे, कह दो कि मैं ठीक से सुन नहीं पाता हूँ। लेकिन नहीं तो तुम बात करना चाहोगे तो ऐसे हो जाएगा जैसे कुत्ते आपस में भौंकते शुरू हो जाते हैं, और अपनी विकार ही बढ़ाओगे। यहाँ तक हमने आज पढ़ा। हो गया 8:30 बज गए। समय आज भी समय काफी हो गया, तो शायद पूरी तरह से हम उपेक्षा ब्रह्म विहार के अभ्यास नहीं कर पाएंगे, कल करेंगे। तो समापन करते हैं संक्षेप से। सर्वे सत्ता सुखी भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा किञ्चित् पापमागमात्, मा किञ्चित् दुःखमागमात्, मा किञ्चित् शोकमागमात्। भवतु सर्वमङ्गलं, रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वबुद्धानुभावेन, तदा सुखी भवन्तु मे। भवतु सर्वमङ्गलं, रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वधर्मानुभावेन, सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं, रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वसङ्घानुभावेन, सदा सुखी भवन्तु ते।
Arhan Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sanghang Namami. Thank you. Namaskar. Close the session now.